दोस्तों हम सिटी टूर की तरफ निकल चुके हैं, हमारी टैक्सी आ चुकी है। हे हाउ आर यू? दोस्तों हम चल चुके हैं सिटी टूर की तरफ। आप रास्ते में व्यू देख सकते हैं। स्टेडियम, जलांगेसा स्टेडियम। यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की बहुत अलग अलग कारें हैं, आप देख सकते हैं। ये हमें सिटी टूर पर ले जाने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, और ये है बस जिसमें हम सिटी टूर करने वाले हैं। काफ़ी लग्जरी बस है यार। हाँ सब कुछ है। हम बस में एंटर कर रहे हैं। शहर को देख सकते हैं, शहर कितना साफ सुथरा है। यहाँ पर बिल्डिंगें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। नहीं है या थैंक यू। No. No. Few days, so probably you all realize that, oh, Singapore weather is very unpredictable, yeah? Well, there's a lot of people saying Singapore weather is like a beautiful woman, whatever.
gentlemen, ladies and gentlemen, take a look at the roof. Can you see it? Not yet, Not yet, You can see the building. You see it? A building देख सकते हैं कैसी है. Okay, maybe when we come back, when we go to Marina Bay, we'll be able to see the roof. Can anyone see the roof? Okay, a lot of things, right? I believe, I think the Spanish. JP Morgan बैंक की बिल्डिंग दिखा रखी है आपको. And also, अगर आपको नहीं पता JP Morgan बैंक अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है. what happened in the Kolkata? No, I heard Kolkata also has this place called the Kolkata Palace, right? Yeah, it's a very, very beautiful place where you see a lot of colonial buildings. Okay, guys, very important when we go to the colonial area. Okay, well, ये सिंगटेल कंपनी के ऑफिस है दोस्तों सामने. सिंगटेल कंपनी सिंगापुर की सबसे बेस्ट टेलीकॉम कंपनी है. Okay, friends, will be here till about. Was actually the Empress of India, which was actually Victoria a long time ago. Now, very important for the Indians in particular is this particular area. Has anyone heard of Mr. Shivaay Thunderbolt? Okay, Mr. Boss actually can relax behind a memorial over there. But this is a very, very important place. Now, for Singapore, this is the person that actually found Singapore. Okay, gentlemen, when you look at this, you see the hanging light here and a barrier. Can anyone guess what's going to happen here? बैंक ऑफ चाइना की बिल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर, और एक साथ में है UOB OCBC बैंक एंड सिंगटेल. दिस इज JP Morgan is here. कैपिटल लैंड बैंक ऑफ चाइना एंड पास का एरिया देख सकते हैं. Department, everything around here. But right now, if you all are into history and art, this is a good place. This is actually the Asian Civilization Museum. Okay. Okay, guys. We stand in a nice shade. यहाँ पर भी 7-11 स्टोर्स हैं दोस्तों. आप भीड़ देख सकते हैं, ये मरीना बे के पास की भीड़ है. ये है दोस्तों सिंगापुर की सबसे फेमस मरीन बे. एक्चुअली वैसे ये छोटी मूर्ति है, आप बड़ी के पास भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और मैं बड़ी दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पर है. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ये देखिए, ये है वो दोस्तों, ये है मरीन बे, और ये देख सकते हैं मरमेड की जो, और उसके सामने बिल्कुल पड़ता है.
तो दोस्तों ये है मरीन बे के आसपास का एरिया जो आप देख सकते हैं। ये एक होटल है यहाँ पर, 5 स्टार होटल। उसके ऊपर एक इन्फिनिटी पूल है, स्विमिंग पूल। आपको अगर वहाँ जाना है तो आपको 3500 के आसपास की जो टिकट है। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको 3500 से 4000 रुपये के आसपास की जो टिकट है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ गेस्ट के लिए है। और ये यहाँ का आसपास का एरिया है, आप देख सकते हैं लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और भी लोग जल्दी आने वाले हैं दोस्तों। तो the heat of the lion. Now, anyone know what Singa means? Lion. It's actually a Sanskrit word for lion. So it goes back about, notice that somewhere there was a sparkling white beach. The beach was sparkling like diamonds under the hot sun. So the whole name of Singapore, Masa means sea town, just a simple sea town. So the prince was very, very curious. So he decided this island for a reason. Now, while he was rowing, remember during the time there's no engine, nothing, they depend on